एवरीवन, वेलकम टू आदर्श इंग्लिश क्लासेस। और इस वीडियो में हम लोग एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल सिलेक्शन से जुड़ी प्रिपरेशन की बात करेंगे। तो उड़ती उड़ती अफवाहों को छोड़कर आप लोग अपना सारा कंसंट्रेट सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रिपरेशन पे लगाएं। ये वैकेंसी ऑथेंटिक है और खुशी की बात यह है कि इन विद्यालयों को अब CBSE UGC ने गोद ले लिया है और इसकी शुरुआत 2012 से ही हो गई थी, लेकिन करेंट में 2020 में मिजोरम में इसका एग्जाम हो चुका है। ये स्टेट वाइज वैकेंसी है और इसमें सिलेक्शन के काफ़ी चांसेस हैं। तो अब आप लोग मन लगाकर अपनी प्रिपरेशन पे लग जाएं, अफवाहों से दूर रहें। हमने सेपरेट के बजाय अटैच वीडियो बनाया है, तो एक ही वीडियो में दोनों कवर अप हो सके। जनरल इंग्लिश की भी क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग कर लेंगे और सब्जेक्टिव इंग्लिश का भी क्वेश्चन हम लोग इसी वीडियो में डील करेंगे। इसलिए एक ही साथ एक ही वीडियो में हम लोग दोनों चीज़ों को कवर करते हुए चलेंगे। सो लेट्स वेरी क्विकली गेट स्टार्टेड विथ सम इम्पोर्टेंट MCQs and let's try to master all of them. Without taking a very time, let's start it. Our first question is, which of the following statement is not true of Areopagitica? So there are 4 options here. इनमें से कौन सा स्टेटमेंट एरियोपेजिटिका के लिए सही नहीं है? नोट को आप लोग ज़रूर ध्यान रखेंगे गाइस, नोट को ज़रूर कंसीडर करें। सो व्हाट इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? ऑप्शन सी, its pleas for British privilege regarding free trade. And whenever we are talking about Areopagitica, it is a book written by English poet John Milton in 1644. He wrote it to protest against censorship. Its full title is Areopagitica and a speech of Mr. John Milton for the liberty of unlicensed printing to the Parliament of England. So option C will be our right answer. Option C. Move on to the next question. Our next question is, in which of the following novels is Moses Zogobi by the narrator? Guys, here our right answer will be option A. Option A. The Moor's Last Sign. थॉमस मूर का ये जो नॉवेल है लास्ट शाइन, उन्हीं की बात हो रही है। सो थॉमस मूर वॉज एन इंग्लिश लॉयर, जज, अ स्पेशल फिलोसोफर, ऑथर, स्टेटमैन एंड नोटेड रेनेसेंस ह्यूमनिस्ट. ही ऑल्सो सर्व्ड King Henry VIII as Lord High Chancellor of England from October 1529 to May 1532. So here option A become the right answer. Move on to the next. Our next question is, it is a very famous quotation here. It is a very popular line. I am not an angel dash and I will not be one till die. This is. So आपको बताना है कि ये प्रीटी सी कोटेशन किस नॉवेल से ली गई है और उनके राइटर कौन हैं। Guys, these all are very authentic question here. So must you have to write your answer in the comment box. So here our right answer will be option C, Jane Eyre. These lines are taken from Jane Eyre. And Jane Eyre is novel by English writer Charlotte Bronte and published under the pen name Currer Bell. Charlotte Bronte ने अपने पेन नेम के ज़रिए इसको पब्लिश करवाया था और ये 1847 में पब्लिश हुई थी. सो द फर्स्ट अमेरिकन एडिशन वॉज पब्लिश दैन फॉलोइंग ईयर हार्पर एंड ब्रदर्स बाय न्यूयॉर्क. सो ऑप्शन सी बिकम आवर राइट आंसर हियर. Okay, move on to the next question. Our next question is, Il Migiller Fabro is the expression Eliot used for. So there are 4 options here. You have to choose your right answer. And these all are very authentic and very scoring questions. Always keep on your mind. So please choose your right answer here. Here our right answer will be option
D. Ezra Pound. And what is the full name of Ezra Pound? Ezra Weston Loomis Pound was an expatriate American poet and critic, a major figure in the early modernist poetry movement, and a fascist collaborator in the Italy during World War II. So here our right answer will be option D. और आपको बता दूं कि इनकी जो एपिक पोएम है वो 800 पेज की है. Move on to the next question. Our next question is Harriet V. Staub had wanted to write a work based on the life of an Afro-American writer. So which was later published as? So you have to choose your right answer here. Here our right answer will be option B. Incidents in the life of a slave girl. And I am talking about Harriet B. Staub. So Harriet Beecher Staub, and she was an American author and abolitionist, and she came from the Beecher family, a famous religious family, and became best known for her novel Uncle Tom's Cabin. It is written in 1852. इनकी सबसे फेमस वर्क है अंकल टॉम्स कैबिन, जो कि 1852 में पब्लिश हुई थी. सो हियर आवर राइट आंसर विल बी option B. Move on to the next. So, our next question is, in which of the following does Robert Shadi detail the Indian superstitions as an idolatry to be suppressed by a civilizing Protestants from colonialism? So, there are 4 answers here. You have to choose your correct answer. What is the right answer of this question? Guys, whenever we are talking about Robert Shadi, so here our answer will be option B, The Curse of Kohima. And Robert Shadi was an English poet of Romantic school and poet laureate from 1813 until his death. 1813 से लेकर अपनी डेथ तक वो पोएट लॉरिएट बने रहे. So here option B become our right answer. Move on to the next question. Our next question is, Christopher Marlowe was one of the first major writers to affirm what can be identified as a clear homosexual sensibility. Which drama of his deal with it? So you have 4 options here and you have to choose your right answer. Here we are talking about Christopher Marlowe. So always keep in your mind whenever we are talking about homosexual sensitivity, then our answer goes to option A, Edward II. बात जब क्रिस्टोफर मार्लो की होती है तो ये एक कोर्ट पोइट थे. क्रिस्टोफर मार्लो, ऑल्सो नोन एज कीट मार्लो, was an English playwright, poet and translator of the Elizabethan era. So here our right answer will be option A, Edward II. Move on to the next. Our next question is, the monster in Frankenstein is not responsible for the death of. Guys, always keep on your mind. The question tells about not. So consider in your mind. Not की बात जब भी आए तो क्वेश्चंस को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें और फिर उनको डील करने की कोशिश करें. यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन उस मॉन्स्टर के डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है. So here our right answer will be option D, Alphonse Frankenstein. And Frankenstein written by Mary Shelley. Who was Mary Shelley? Mary Shelley is the wife of P.B. Shelley. So here our right answer will be option D. Move on to the next. Our next question is, Chaucer satirizes the monk because the monk. चौसर ने किन पे सटायर किया है? यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं. आपको आपका राइट आंसर चूज करने हैं. So here our right answer will be option D. Option D. They spend too much time hunting and too little time on the religious duty. इसीलिए चौसर ने उन लोगों पे सटायर किया था क्योंकि वो पूजा पाठ पे कम, रिलीजियस पे कम और हंटिंग पे ज़्यादा ध्यान दे रहे थे. And whenever we are talking about Chaucer is a very prominent writer of the Middle English. So Geoffrey Chaucer was an English poet and author and widely considered the greatest English poet of the Middle Age. He is best known for the Canterbury Tales, and
He has been also called the father of English literature and alternatively the father of English poetry. So always keep on your mind, Geoffrey Chaucer is very important and prominent writer of the Middle Ages. Okay, move on to the next question. Next question is that humanities and the science were in fact two cultures was suggested by. So आपको यहाँ पे बताना है. So here our right answer will be option C, C.P. Snow. Whenever we are talking about C.P. Snow, his full name is Charles Percy Snow and he was English novelist and physical chemist who also served in several important positions in the British civil service and briefly in the UK government. So here our right answer will be option C. Move on to the next question. Okay, so now it is time to grammar. और ग्रामर में आज मैं टेंस के क्वेश्चन लेकर के आई हूँ गाइस, और हम लोग डिफरेंट टाइप्स के ग्रामर के पोर्शंस को डील करते हुए चल रहे हैं ताकि एग्जाम में आपको कोई दिक्कत ना हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े, सारे क्वेश्चंस को यू कैन डू इजली. तो आपको टेंसेस फाइंड करने हैं. फर्स्ट सेंटेंस इज शी डैश द लेटर्स. सो 4 ऑप्शन हैं हियर और आपको बताने हैं कि कौन सा सही होगा. So here our right answer will be she has just completed the letter. Option B. यहाँ पे just completed होगा, has just completed. She has just completed the letter. और यहाँ पे letter है guys, यहाँ पे R है ये. Okay, move on to the next. Next one is it dash to my notice lately. लेटली लगाकर इस सेंटेंस को क्या कंसीडर किया जा रहा है कि ये भी हाल फिलहाल की बात हो रही है. लेटली मीन्स करंट की बात हो रही है. सो हियर आवर राइट आंसर विल बी शी हैज़ कम. इट हैज़ कम टू माई नोटिस लेटली. और हैज़ कम क्यों? क्योंकि यहाँ पे लेटली लगा हुआ है. लेटली के साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जाता है. ओके, मूव ऑन टू द नेक्स्ट. नेक्स्ट वन इज माई ब्रदर डैश फ्रॉम ट्रेनिंग 2 months back. And always remember it whenever we are talking about past tense. देखिए यहाँ पे बात past tense की हो रही है ना, 2 महीने पहले की ही बात हो रही है कि वो लौट गए हैं. So जब वो ऑलरेडी लौट चुके हैं then return B2. So here our right answer will be option B, return. My brother returned from training 2 months back. Move on to the next. Next one is she dash the letter till now. So here our right option will be option B. She has not written the letter till now. उन्होंने अभी तक लेटर नहीं लिख पाई है. Move on to the next. Next one is last week I dash him twice. Last week मैंने क्या किया? उनको 2 मिला. Option C will be our right answer. Last week I met him twice. मैं लास्ट वीक उनसे 2 बार मिला. सो ऑप्शन सी बिकम द राइट आंसर हियर. मूव ऑन टू द नेक्स्ट. ओके, नाउ आवर क्वेश्चन एंडेड हियर. लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि ये सारे क्वेश्चंस एकदम ऑथेंटिक है और आप पूरी तरह से इन क्वेश्चंस पे यकीन कर सकते हैं. पेपर 2 वालों के लिए सिमिलर क्वेश्चंस ही आएंगे. मैं ये नहीं कहती कि यही आएंगे, लेकिन हाँ इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे. अगर आपने ये कर रखा है तो आप ऑफ कोर्स आप उन क्वेश्चंस को भी डील कर लेंगे. इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक्स फॉर वॉचिंग.